So up to yesterday, we were talking about the neuroplasticity. Neuro- And earlier, there was a concept that neuroplasticity does not exist. But again, then there were the new theories, new concepts. Yes, neuroplasticity exists. And it is helping people to recover large number of problems and large number of diseases. Neuroplasticity supports large number of problems in the brain, and it also is adaptive way of learning. It not only helps you in learning, remembering, memorizing, and recalling, but all what you do in your life is neuroplasticity. Acquiring every skill you see, you started acquiring one by one step of that skill, and today you have acquired large number of skills. So when every day when you get improved, and then when the improvement is stable, is called what? Neuroplastic changes. For example, we stimulate the brain and we see the changes in the body, functional recovery immediately, right? But after some time, when we stimulate, you don't get it. Why? Because when the patient, when the signals are adaptive, when the signals get adapted, then the response is good. And it should be continued, it should be continued immediately. But what we will do? We will wait, we will watch, we will think, we will discuss, and ultimately, till the case is to begin, it ends somewhere where there is no solution to the patient. Just give me 1 minute. So now, yesterday we talked to you many things regarding this. The most important part we understand that whenever there is a deprive of oxygen, deprive of blood supply, clot, or bleed inside the brain, the tissues which brings functional recovery, functional movement inside the body, the movement in the hands and legs are there. It is deprived. When it is deprived, it is deprived when there is a lack of blood circulation, embolic uh, clotting inside the brain, something because of cardiac stroke, you lose the uh, blood circulation inside the brain and it becomes damaged. So all this we see one after another, and we come to a conclusion that yes, the brain is damaging and the recovery has to take place at its own time. So whenever we say the most important thing, how to remember things. See, when you ask me, how do I remember things? I generally switch off the
GPS, right? The GPS means what? You see me whenever I take the class, I close my eyes and I take the class. So you may not think that I'm sleeping, so I have to open my eyes. Otherwise, I like to take my classes by closing the eyes. Why? I like to close my eyes and take the class because I want to see the power of my navigation. So turn off the Google map and try to drive your car with the map inside you. And that is called neuroplasticity. You understood my point? So again, you can say math on the fly. So when you do mathematics, you don't calculate with the calculator. You do it with the what? Flying, right? 24 into 2, 22 into 22 equal to 444. So it becomes 484. Now you see, how do I know? 22 into 22, 2 to the 4, 2 to the 4, 44, again 4, again 4. So add it. 4, 8, 4. So that is another way. Add shopping purchases, right? So whatever you want to shop, you add your purchases without making a list, right? Try to memorize as much as you can what I have to purchase. And where will you find? So you have to store everything in your memory. Where you will find the things? How far is what? You have to recall it, right? It is called minimize the things, not memorize. Minimizing the things. So you go to your imagination world and then you minimize this. Right step, five towards left, five steps towards left, three towards right, two towards left, and then straight away you will get your bed. You can sleep. So this is how you have to memorize things. However, blind people have a very good memory. Why? Because they don't waste the energy with the eyesight. You got my point. So they are very focused. So generally, what I will suggest you should try to memorize the phone numbers. Like I try to memorize all the CT scan and MRIs and the name of the patients, the treatment given, the disease given. I try to memorize everything, right? New recipes, following steps, directions, planning. Tai Chi planning sequence of movements. So all this helps you to our brain boosters for neuroplasticity. It's for a normal person also and those who are having a brain stroke also. This is a part of OT called occupational therapy. Now what we did, we have included brain stimulation with occupational therapy. So that is our another part of the treatment. Musical instruments, fixed motor, auditory processing, and procedural thinking. So far,
Read the news actively every day. Activates attention centers, remembering the score of sports and events. So there is another way of understanding this that you see by a visual memory. So you see everything after the match is half past. Lunch hour of the match is there. What you used to do is to close your eyes and then you should see who is holding the cricket bat, who is holding the bowling, what is going on. You just see all this thing very calmly, very coolly, and you will see, man, it becomes like neuroplasticity. So everything are called the brain boosters. The review of neuroanatomy. So we have already said you. The review is what? The lobes, the brainstem, the blood supply, anterior supply, and the posterior supply. So anterior, frontal, parietal, temporal, occipital, sulci, and gyri. So this you will see. These are the place where the blood circulation goes. Lateral fissure, there is sylvian fissure. This sylvius fissure is the area which is divided by the frontal and parietal in between temporal. So there is a cut between frontal and parietal with a cut. This cut is called, hmm, this cut is called what? Tell me. Huh? Why is a sylvian fissure? It's a sylvian fissure above the temporal lobe, dividing into frontal, parietal, temporal. So a line divides the frontal parietal by temporal. So in posterior part you will see brainstem and cerebellum. So above you have seen the frontal part. It is frontal lobe, parietal, temporal, occipital, right? And this are as a whole. If you see, there is no division inside the brain. So up to the motor part works, it becomes frontal lobe, and once it frontal lobe, then parietal lobe, then occipital, then temporal, then get what? Mm. So it is called what? Great. What was my question? Cerebrum cortex. Huh? Ah. So the one which divides the right and left is called, Corpus callosum. right. But you will call it here as uh, mm.
So here you will see the location of the brainstem, the dura, tentorium cerebelli, interfrontal lobe, and the supraparietal, supratentorial, infratentorial, tentorium cerebelli, and dura. By chance, if I stop for a long time, just wake me up. Huh? I'm slightly tired. So subdural spaces by bringing veins, subdural hematoma. So some people were asking me what is hematoma. So it is the space in, you can say pia and durameter is a subdural space. So any type of aneurysm occurring there, generally 90% or 96%, there is aneurysm between there. And it becomes what? Hemorrhaging bleeding. Suborgan space is a space where all the cerebral arteries are located. Anterior and posterior blood supplies meet at the base of the brain and is called the circle of Willis. So here is the beautiful location from where the arteries are formed. So the two vertebral arteries convert to basilar artery. This basilar artery, when goes inside the brain, it takes different areas. As per the area of the brain, it is defined. And when you understand the anatomy of circle of Willis, you will be able to understand the different types of stroke, and then you can understand. If you want to grow in this field, you have to treat 8 years of bedridden patient. So here you see lateral and coronal view. So here you will see what? Where is my cursor? Here you will see frontal lobe. This is the central sulcus. This is the frontal lobe. So one line before the frontal is the motor cortex. One line after the motor is the what? Zakir Hussain Ustad. You tell me why I call Zakir Hussain Ustad one side. This frontal. Why do I call parietal as a Zakir Hussain Ustad? Hmm? Anyone? This parietal lobe, right? This is the occipital, prefrontal, temporal, cerebellum. So this is the homunculus, on the basis of which you say geosunfa scalps. Uskar Mullah na, this was the madam na, who was saying scalp acupuncture. So these are, they call it motor cortex. Now this line is called as geomotor line. So geomotor line is two-third upper limb, two-third lower limb, one-third voice. Ayo amma.
Is it that possible so easy that you stimulate the brain and it will recover in this direction? Radu. So here you will see this temporal, frontal, this is a longitudinal feature. So here you can see the upper motor pathway. Now you can see whenever there is a paralysis, this is the pathway which is damaged. Now you were asking me, Ruskar Mullah, na? Madam, you were the one you were asking me, na? About the paralysis patient and neuroacupuncture. Acupuncture and paralysis patient. हेलो उस दिन कौन पूछ रहा था मुझसे सवाल मैडम कैन यू हियर मी कौन सा क्वेश्चन सर? कि आपने एक्यूपंचर से ट्रीट किया था पेशेंट को रिकवर हो गया आंगली मुड़ी हुई थी वो ठीक हो गई हाँ मैंने बोला था। हाँ मैंने बोला हाँ था। हाँ, अब आप एक बात बताओ ये रहा हाँ मोटर एरिया का ये इसका पाथवे है ये इसका रास्ता है अब इस रास्ता पर आप कैसे चलोगे बताओ ये रास्ता के थ्रू मूवमेंट होता है ये रास्ता को आपने रिपेयर किया इसका मतलब ये जो आता है वो तो पूरा सही नहीं है ना और चीजें भी चलना है It's called the internal capsule. This is called the crossover medulla. This is called the basal ganglia, upper motor neurons, spinal tract. So this is the spinal tract. This is the lower motor neuron. Now, whenever you see a motor neuron disease, it is classified into three parts. What are they? Upper motor neuron, lower motor neuron, and the combination of both is called ALS, amyotrophic lateral sclerosis. Am I clear? So this is called corticospinal tract. So whenever we try to improve the brain, we have to work with the corticospinal tract. This is the entire tract of the brain, right? Am I clear to you? Am I clear? Yes, sir. Yes. Yes, sir. Yes, sir. मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? Yes, sir. And now you understood why we need to understand all these things. Yes, sir. Sir, could you please repeat the third one? Upper motor neuron, lower motor neuron, third one. See, in MND, write down motor neuron disease is in bracket is written as MND. MND is classified into three parts. What are they? Upper motor. Upper motor neuron, UMN, Lower. second LMN, And medial. Upper lower. And the and part join upper and the lower. third is what? Some big name you told, sir. Combination of both, sir. Upper and lower. A combination of both. It is called as ALS. So the patient which you have seen in my Facebook is the patient who is suffering from ALS. And this is called the corticospinal tract. So whenever you are speaking, so can I recover the patient like this, like that, doing this, doing that? I have only one small question. I can give me, Baba. Diazepam and beta.
Basement. Okay. Dutch apartment. And it also additional. Any homeopathy doctor is here in this group? No electro-homeopathy, proper homeopathy, Baba. I am a homeopathic physician. Hello, Baba. Send me the rescue remedy immediately, Baba. चेस के लिए. हाँ रेस्क्यू रेमेडी बाबा इमीडिएटली 2 बोतल रेस्क्यू रेमेडी भेजो अर्जेंट कुरियर से भेजो मेरे को जिम्बाब्वे जाना है अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ना सर, मैं मैसेज करके भेज देता हूँ ना व्हाट्सएप. अब वो व्हाट्सएप में एमके शास्त्री लिखो तुमको एड्रेस मिल जाएगा हाँ ठीक है और ना सर. रेस्क्यू रेमेडी भेजो बेटा ओके सर. मैं 15 तारीख को जाएगा एक डीटीडी से हाँ कोई बात नहीं सर, ठीक है कोरियर ना. डॉक्टर हाँ. खाली एक ही मेडिसिन रेस्पॉन्ड किया अभी तक अच्छा. रेस्क्यू रेमेडी ओके ओके. वो भी 2 आवरली अच्छा. और मेरे को कोई मेडिसिन रेस्पॉन्ड नहीं किया रेस्क्यू हाँ. रेमेडी लेने से 2 घंटा तक खांसी नहीं आता ओके ओके. कितने दिनों से सर खांसी आपको? ये हो गए ये 10 महीने अरे बाप रे, 10 महीने से. हाँ 10 महीने से मैं ये मेडोपेनम मैं सब लेके थक गया ओके ओके. बूढ़ी कॉर्ड मेडोपेनम हाईएस्ट एंटीबायोटिक लेके मैंने सब बंद कर दिया तो मैं आपको एक और एडवाइस करूंगा, मैं कुछ मेडिसिन आपको भेजूंगा, तो वो थोड़ा सा आप साथ में ले लीजिए. कुछ भी नहीं हाँ, आयुर्वेदिक मेडिसिन है, उसमें कुछ ऐड करके मैं आपको भेज दूंगा, तो आप साथ में ले मैं लीजिए. तो ये चितोपलादी और उसके साथ ये क्या नाम है शिवाक्षार ये सब मिला मुलू के खा लिया है नहीं नहीं, उससे मिलेगा सर, मैं काफी सारे पेशेंट के ऊपर ट्राई किया हूँ, जिनकी खांसी काफी समय से होती है, उनको आराम मिलता ही है उससे. ठीक है, थोड़ा सा 15 दिनों से अरे लेना. कुछ भी मेरे को तो कुछ भी चलेगा पापा बस रेस्क्यू रेमेडी जरूर भेज देना ठीक है ना सर, ठीक है. ओके रेस्क्यू सर. रेमेडी तो भेज देना ओके सर. हैदराबाद में होम्योपैथी की दुकान कहाँ है पता नहीं मैंने बहुत खोजा मिली नहीं अब वो तो ऑनलाइन भी मिल जाएंगे ना सर आपको. वो एलोपैथी ये सारा 35 रुपया में मिलता है ऑनलाइन में जो रेस्क्यू रेमेडी है वो 500 रुपया में मिल रहा है 1000 रुपया में मिल रहा है वो भी साला स्प्रे मिल रहा है साला 3 दिन में स्प्रे खत्म सर मैं और कुछ तुम्हारा सजेस्ट एक करूँ क्या? हाँ बोलो आप है ना बोलो जागीर बहुत ज्यादा खाओ. टी बनाते ना, जागीर, हाँ अदरक, जिंजर, दालचीनी और बस ये इसका तीनों का काढ़ा चाय पाना बहुत ज्यादा पियो. काढ़ा बना बना के थक गया मैं 10 मूल का नहीं नहीं, काढ़ा से लेके सब कुछ ये दालचीनी ये भी तो. अदरक लवंग और ये खजूर और ये क्या बोलता है एक और आइटम तेज पत्ता इसका काढ़ा बना बना के पी के मैं थक गया नहीं नहीं नहीं, तेज पत्ता नहीं लेना है आपको. गुड़ बहुत ज्यादा लिमिट में, क्योंकि
ये इसका रूट कॉज है कफ, कफ कंट्रोल करता है गुड़। कफ ये नहीं है मेरे को, सबसे बड़ी बात है कफ नहीं है, मेरा गला में इरिटेशन है। कफ, आई डोंट कफ हैव नहीं है। फ्लेम। नहीं मैडम, इसलिए मैं बोला डायग्नोसिस थोड़ा देखो। कफ नहीं है मेरे अच्छा, को। मेरा कारण हुआ ये, लगातार क्लास लेते लेते मेरा गला इरिटेट हो गया, लेरेंजाइटिस हो गया एक तरह का। सर नहीं तो आप CV एक बात सोचो। 22 और ST9 स्टिमुलेट किए हैं सर, अच्छा इफेक्ट मिलेगा। नहीं ये उसको करते सेकने हैं से नहीं, बहुत रेस्ट मिलेगा, सेकने से सिर्फ। मैडम, जहाँ मेरोपेनम, मेरोपेनम इज द हाईएस्ट एंटीबायोटिक। डेस्मेट जो आईसीयू में मेडिसिन यूज करते हैं, वहां वो फेलियर हो गए, तो ये क्या काम करेगा? बूट कोट, ये डेक्स, मैं बत सर मैं बूट दो कोट, फुट कोट सब 2009 बंद हो गया। सर मैंने 2009 से एक गोली भी नहीं खाया है। मैं नेचुरोपैथी को फॉलो कर रही हूँ और काफी आप तो बेस्ट। नहीं खाया, पर हमारा आप एक काम करो, मेरी रूटीन फॉलो कर लो 3 दिन, आपको पता चल जाएगा आपकी नेचुरोपैथी। और 3 दिन में आपकी नानी याद नहीं आ गई तो मेरा नाम एमके शास्त्री नहीं है। ओ, तो ये भी है, ये भी हाँ, सही है। आपकी जो रूटीन और मेरी जो रूटीन है उसमें जमीन आसमान का फर्क है मैडम। हम्म, ठीक है। लेकिन फिर भी थोड़ा सा हल्का मसाज और स्टीम लो, रेस्ट होएगा, मसल्स को स्टिमुलेशन मिलेगा। सारा दे दिया इसको, लास्ट में रेस्क्यू रेमेडी के भरोसे छोड़ दिया। वो भी मेरे को ऑस्ट्रेलिया से पता चला, क्योंकि एक ऑस्ट्रेलिया से इंटरनल मेडिसिन की डॉक्टर आई थी। जी ओनली टोट मी कि रेस्क्यू रेमेडी काम करता है। मैं बोला सोच कहाँ काम करेगा, बट देन आई सो इन ऑल माई लेक्चर्स आई शुड टेक 5 drops below the sublingual area, and immediately मेरा गला रिलैक्स हो जाता। देन आफ्टर every 2 hours आई स्टार्टेड टेकिंग इट। फिर लेकिन दोथेरा सर में एक इतना कोर्स, और दोथेरा इतना के बाद मेडिसिन वो एक वो लोगे, आता है। मेडिसिन का वो साइड इफेक्ट भी तो कुछ ना कुछ होगा। नहीं नहीं, इसका ये इट इज वन ऑफ द बेस्ट ड्रग। रेस्क्यू रेमेडी, बेस्ट फ्लावर रेमेडी, इट इज बेस्ट ड्रग। इट ठीक इज है, वन ऑफ द बेस्ट ड्रग आई हैव सीन इन माय लाइफ। इसलिए क्या बोलते हैं ना, सब कुछ पढ़ना चाहिए। पढ़ते हैं मैंने सर होम्योपैथी लेकिन। पढ़ के, होम्योपैथी पढ़ के एक चीज देखा कि see when the antibiotics are not responding, the when the classical drugs are not responding, सल्फर ये सब जब रेस्पॉन्ड नहीं कर रहे, ब्रश टॉक से सब कोई रेस्पॉन्ड नहीं कर रहे, तो सबसे अच्छा ड्रग रेस्पॉन्ड कर रहा है बेस्ट फ्लावर रेमेडी। और उसमें भी ये सबसे अच्छा रेमेडी है, रेस्क्यू रेमेडी। एंड क्लासिकल ऑयल में तोथेरा बोल के जो ऑयल आता है, उसमें पेपरमेंट और ये लेमन ग्लास, तो एक एक ड्रॉप पानी में डाल दो, गर्म पानी में, और वो पी लो, आपको एकदम इमीडिएटली रिलैक्स हो जाता है। दिस इज व्हाट वाज माय रेमेडी। अब तो तेरा ऑयल नहीं है, मलेशिया का जाएंगे तब लेके प्रॉब्लम, इसका आएंगे। नाम क्या, आपका प्रॉब्लम का नाम क्या? ये ये अनडायग्नोस्ड है। बेस्ट अनडाइन। रेस्पिरेटरी डॉक्टर ऑफ हैदराबाद, he has given up my case। बोला शास्त्री जी, आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट इज द केस ऑफ योर्स। आप क्लास लेना बंद कर दो, आपके गला ठीक हो जाएगा, उसका तो यही बोलता है। और जब तक आप क्लास लोगे आपका गला बंद नहीं होगा, ठीक? चलो, तो inferior space of the brain stem view is frontal temporal vacus 3 and 4, you can see this is what the space of the brain. So it is the inferior space. You see this is the medulla. These are the nerves 9, 10, 11, 12. Then pons, then the midbrain. So vacus, venal, temporal, and the frontal. So now you see NIHSS score is measured in stroke severity rated from 1 to 42 based on findings of physical exam. When the patient is evaluated at baseline 2 hours to 24 hours,
7 to 10 days, and 3 months, and then time varies. The higher the number, the greater impairment is. So in the mild impairment, so it is based on NIHS, and it is rated from 1 to 42. Generally, we call it MMT, but here it is called NIHS. So so the stroke which you recover is between 1 to 7. So what madam has recovered, the patient is between 1 to 7, mild impairment, right? But when we get over 15. So it is called severe impairment. The NIHS score greater or equal to 12 has 91% and positive value of central larger vessel stroke. Emergency action taken during first few hours have a significant impact on the extent of future disability. अभी सर मेरा मेरे Really? पास क्लास चालू है तो अंदर में नहीं सुन The frontal lobe, the primary state of the brain, that comprise 1/3 of the cerebral cortex. Prefrontal lobe is your mother. No negative, don't stop. This is inhibitory. Gamma, GABA. So whenever you see, we give GABA, pentine and all these anti-epileptic drugs, they affect in the, these are GABA inhibitory drugs, which helps you in sciatica pain and also in epileptic cases. So where is the lobe which is affected is the frontal lobe. The judgment, insight, forward planning, following steps, direction, procedural thinking, socialization. So all these things are taken decision by whom? The frontal lobe. Once you lose the frontal lobe, what will happen? You cannot take all these decisions. So you become what disoriented. What you become? You become. Disoriented. So which lobe is affected when you become disoriented? Frontal lobe. Yes, madam. So this is the biggest problem when you face the stroke. The different geographical area of the stroke defines a different definition. And until you master this art, you cannot recover the patient. Generally, patients give up and they think that within 1 month it will recover, within 0 month it will recover. They forget that if they go home and they don't continue and they just they think exercise will recover, this is the biggest mistake they think. And if you think only acupuncture can recover, I think again you make the biggest mistake. How will you stimulate this pathway? How signals will be transformed? So these are two-way signals, sensory to motor and motor to Six. sensory. Yeah, it is called sensory motor pathway has to work out. So I call it motory sensory pathway. This is what I have done one step ahead of the disease. What I have done one step ahead of the disease. So all these things what you see interpreted what does thinking, concrete thinking, analytical skills are developed from where? Frontal lobe. So when you take a deep meditation, when you cool yourself, when you understand yourself, what is the area of the brain you recover? Frontal. Frontal. How are a car, plane, and the boat alike? Huh? So if your frontal lobe is gone, you will think like car, plane, and boat are alike. How they are alike?
So all these are the way of thinking, right? The analysis of thinking and understanding the images and rebringing in the situation is done by what? The frontal. So when you stimulate the brain, and if you know higher stimulation, you can develop more and more analytical power. Even I say brain stimulation can help you to become a better analytical things. So that is why we have experimented with NIBS. We found it is not only good in recovery of Parkinson and all. You see, in 5 days, you see a significant recovery has come in a patient. And today she was independently walking. Her voice, everything has become very much independent. So in frontal lobe, you will see a Broca's area, right? So it has been given dedicated to a person whose name is Peter Berry Paul Broca. Berry Paul Broca. So he was the who found on left frontal operculum this area which is called voluntary speech center. And upon him, Broca's area was defined. Which area was defined? Broca's area was defined. Now you tell me, how can two-thirds be upper limb, two-thirds be lower limb, and one-third be speech area? Did we define how Broca's area can be stimulated? Just putting some needle on the muscle tissue. Can Broca's area be stimulated? No. You have to understand what are the nerves involved in speaking. So hypoglossal, glossal, neck, mouth, facial, all these things are what? Involved, right? So it's a 20% of stroke patients with some type of aphasia. So whenever you speak about the stroke, you have to understand which is the dominant hand. Dominant hand means is a right-handed person or the left-handed person. Right. So you call it dominated lobe, right? You call it dominated lobe. Precenter guide is the motor cortex and the upper motor neuron. Voluntary motor movement, center of the brain, send messages to the corticospinal tract through the internal capsule of the cortex to the midbrain to brainstem where it crosses the medulla. Contralateral symptoms side below where it crosses and is fatal. So it is said what precentral gyrus, the motor cortex and upper motor neuron. So you see there is a central sulcus, right? One line before the central sulcus is what? The precentral sulcus, right? This precentral sulcus is the motor gyrus, what is called homunculus. So you can see this is the homunculus, right? Now, if you put a needle from ear to ear, how is this upper area, upper limb? Upper limb is only this one, this much. Can it cover all the muscles? Now, if you come to the lower limb, can you cover all these muscles? Radu. So this is the corticospinal tract, right? This is the upper motor neuron. You see, these are the upper motor neurons, right? That is why in India it is called Sheshna. Under in Sheshna, Shiv Mahadev बैठे हैं.
So this, when we speak about the Seshna, you see it is just like a snake. And that is why it is a Shanta Akaram Bhujanga Sahinam. When we speak about this, these are seven lobes, right? Inside the brain, Shanta Akaram. And now you see, if you see the space like this, it is just like a snake. Am I right or wrong? Bhujanga Sahinam. So whatever yatha pinde tatha brahmande, tatha pinde brahmande, yatha sive, tatha brahmande, yatha pinde. So whatever is in the cosmos is inside your body. And whatever is God is cosmos. That is infinity. So this is the power of infinity. And here we call the cosmos power, right? It looks like a snake, beautiful, temporal, upper motor, and the basal ganglia. And now if you have a stroke over here, you suffer very badly. So all these things require deep brain stimulation, proper recovery. And then if you do once you start doing, I'm sure you will achieve a very good result. So that is why it is said. And this is the spinal tract, you see how spinal tract is formed, and this is the lower motor neurons. Tomorrow I'm going to post a study about a lady who has come to us in the last stage of motor neuron disease, and tomorrow we'll mobilize her. So whenever you see hemiparesis or hemiplegia is always contralateral. What do you mean by contralateral? One opposite side of the brain creates what? Hemiparesis. Extend down 90 degrees if sitting or 45 degrees. And the leg 30 degrees always tested spine. And I scale of 5 to 6 testing. So this is how you test it. Up to 90 degree if sitting or 45 degree spine and leg 30 degree. So the drift score is falls below 10. So these are the way where we how you score it, right? So generally our way of scoring is different. We don't follow NIS score. We follow our own method of scoring, right? And yesterday we have shown you how we follow our own score. We give it instead of giving 10 by 5, this 45, we give degree of 5 because we want to extend the force. Our way is to increase the force of the muscles, right? So what is your problem? आपका प्रॉब्लम क्या है? आप लोग मसल्स की फोर्स को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश नहीं करते. Now, madam, रुस्कार में मैडम, आई एम आस्किंग यू वन क्वेश्चन. आप मेरी बात सुन रहे हैं हाँ सुन रहे. मैडम? हाँ. आपने जो ट्रीटमेंट किया उससे बॉडी का पावर, मसल का पावर बढ़ेगा? कोई थ्योरी है ऐसी कि आपने वहां नीडल लगा दिया और उसका फोर्स बढ़ गया हाथ का? वो एक जोर से मुक्का मार सकता है, ही कैन गिव ए पंच. ऐसा कहीं लिखा है उसमें? नहीं, मैंने 5 ही दिन का खाली ट्रीटमेंट दिया था, स्टिमुलेशन दिया था मोटर नर्व को. और मोटर L5. नर्व बोल के, मैडम मैडम एक बात बताता हूँ. हाँ, नहीं मोटर नहीं, नर्व वो बोल के वो कुछ नहीं एरिया होता है. एरिया 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 मेरे को पर्टिकुलर नहीं अब पता, लेकिन वो मैडम लाइन एक छोटे से, एक मैं आपको कैसे समझूंगा. I'll show you at the end of the course. तो वो जो लाइन है वो कोई एक इमेजिनरी लाइन. इट इज इमेजिनेशन. इट हैज नथिंग टू डू विथ प्रैक्टिकली. मोटर लाइन बोल के कोई लाइन नहीं होती. और मोटर लाइन में मार भी दिया तो स्टिमुलेट क्या जैसे किया? स्टिमुलेटर तो है ही नहीं. अब आप एक बात सोचिए, जो डीएम न्यूरोलॉजी 18 साल पढ़ने के बाद जो आदमी उस चीज को रिकवर नहीं कर सकता,
अब उसको रिकवर 5 दिन में करने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं बताइए नहीं कहाँ की अच्छा, बात है वो ये। नहीं नहीं किया ना तो थोड़ा उसका फंक्शन में चेंजेस हुआ, मूव होने लगा, हाथ जो बंद था वो खुल गया, पर मैं वो आपको एक बंदे ने छोटी सी कंटिन्यू नहीं किया। मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ। आपको स्पास्टिसिटी मेजर करना आता है? कितना हाथ स्पास्टिक है? नहीं सर, मैं इतनी थोड़ा ना डीप में हूँ, मैं देखिए, इतना डीप एक में बात, नहीं अब हूँ, आप लेकिन एक बात बता, एक छोटी सी बात नहीं सर। बताता हूँ। नहीं नहीं, हम्म, मेरी पूरी बात सुनिए। हम्म। जब आप उतनी डीप में नहीं है, जब आपको आधी बात मालूम है आधी बात नहीं मालूम, तो आप बैल मुझे मार वाला काम क्यों करते हैं आप? नहीं नहीं, वो सर ने हमको जो सिखाए थे ना, तो उन्होंने पूरा प्रोटोकॉल दिया था, वो प्रोटोकॉल को मैंने फॉलो किया था और उसका रिजल्ट आया। प्रोटोकॉल को फॉलो किया था मैंने, पूरा पूरा प्रोटोकॉल दिया था उन्होंने, जिसका पैरालिसिस का आपको ये भी जो नहीं मालूम, आपको ये पैरालिसिस कितने तरह के होते हैं, क्यों होते हैं? विंड अटैक है वो। गलती जो है वो तो माननी नहीं है। और जहाँ गलती, इसको जस्टिफाई करना, सर ये तो उन्होंने सिखाया था, जो किया वो कर दिया। अभी उनका एक्सप्लेनेशन था सर, उसके साथ में मैंने फॉलो किया था, एक्सप्लेनेशन समझ के फॉलो किया था। मैडम कुछ भी नहीं समझा आपने। हाँ ये तो है, अभी वो जितना डीप डीप जाएंगे उतना ज्यादा उसमें ये समझ में आता है। हमने सरफेस डीप लेवल डीप पे क्या है? ये तो किया है। बेसिक चीज है, ये तो बेसिक चीजें है। ये एमबीबीएस का फर्स्ट सेमेस्टर का फर्स्ट किताब है। डीप कहीं नहीं जा रहे हम। ये फर्स्ट सेमेस्टर का फर्स्ट किताब जो है वो ये सब्जेक्ट है। इसको ह्यूमन फिजियोलॉजी बोलते हैं। But then you will see at the initial level, reflexes may be absent. So there are many reflexes: tip tendon reflex, plantar reflex. All these are reflex in the initial stage. But as the nervous system recovers, you will see the shock of the stroke is also over. So brain is a shock. एक झटका सा लगा ब्रेन के अंदर, वो शॉक फिर धीरे धीरे रिकवर हो जाता है। Motor function may begin to recover, but will recover without a normal mom or inhibitory input. So this is how you understand a very beautiful concept of what neuroplasticity inside brain. ये देखिए, इसमें आ गया ना ये सब बातें। नो मॉम, स्पास्टिक पैरालिसिस। हेमी पैरालिसिस का मतलब होता है स्पास्टिक पैरालिसिस, हाइपर रिफ्लेक्सिया, यानी अगर आप जब टेंडन को मारेंगे तो रिफ्लेक्स ज्यादा मारेगा, राइट? बापेंस के साइंस: रिफ्लेक्स प्रेजेंट और एब्सेंट। डोंट यूज द टर्म पॉजिटिव और नेगेटिव और कंफ्यूजिंग, राइट? दिस आर द सम। हेमी पैरालिसिस का स्पास्टिक पैरालिसिस, हाइपर रिफ्लेक्सिया, ये डिप टेंडन रिफ्लेक्स बोलते हैं इसको। एक घुटनों पे, एक आंख एल्बो पे, और एक इस पे। ये देखिए, ये माउस मारा आज कहाँ गए? ये देखिए, इसको क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्स। अगर ये पैरालाइज होगा तो ये हाइपर रिफ्लेक्स मारेगा, राइट? कट, जोर से मारेगा।
बाबिन्स की साइन आपको पैरों में होता है, राइट, फीट पे। तो बाबिन्स की साइन में भी प्रेजेंट और एब्सेंट, इट डज नॉट मैटर, कभी बाबिन्स की प्रेजेंट हो सकता है, कभी डिमिनिश हो सकता है, राइट। And why we always tend to the side when we check reflexes. And so we have to check our side. The Babinski design was formed by whom? A Parisian of Polish origin described the famous abnormality of the extensor plantar response in the disorder involving corticospinal tract in series short articles beginning in 1996. So this is a person, Babinski, and उसके ऊपर ये नाम दिया गया था कि बाविन्स्की रिफ्लेक्स। आप देख सकते हैं पैरों को हम लोग कैसे रिफ्लेक्स देते हैं, इससे पता चलता है इसको आगे की तरफ जा रहा है पाँव या पीछे की तरफ जा रहा है, यानी लोअर मोटर न्यूरॉन इन्वॉल्व है या अपर मोटर न्यूरॉन इन्वॉल्व है, राइट। तो बाबिन्स्की साइन कब निकला था? इज अ पर्सन जॉस फ्रांसिस फेलिक्स। So Joseph Francis Felix, he started in 1957 to 1932. English physician used Rolls-Royce key. So madam, here you can see, जिसको आप मोटर लाइन बोल रहे हैं, ये रही। अब आप मेरे को एक बात बताइए, कॉर्टिको स्पाइनल क्रॉस सेक्स, इसको आप कैसे इंटेक्टिवेट कर रहे हैं मोटर लाइन से, बताइए। आप क्या बोल रहे हैं और ये क्या है, बताइए। जैसे लोअर मोटर न्यूरॉन्स का सिग्नल पाथवे देखिए आप, यहाँ से जा रहा है। मोटर एंड सेंसरी पाथवे देखिए आप कैसे जा रहा है। ये मस्कुलोस्केलेटल पाथवे, ये देखिए हाउ मसल मूव्स, एंड इट इज क्रॉस ट्रैक्ट, ये देखिए यहाँ क्रॉस ट्रैक्ट होता है, ये देखा आपने। एंड एक्स्ट्रा पिरामिडल ट्रैक्ट, ये देखिए। इतना सुंदर संरचना है, इट्स ब्यूटीफुल आर्किटेक्चर ऑफ द ब्रेन। इससे सुंदर आपको क्या मिलेगा मैडम? इससे सुंदर तो आपकी वाइफ भी नहीं है। 100 बिलियन न्यूरॉन्स। एक मिनट में एक स्ट्रोक हो जाए और 10 घंटे के अंदर 32 साल आपके नुकसान, और आप सालों साल उसको क्या कुछ ना कुछ करते रहते हो। आप उसका एक एक दिन बर्बाद करते हो ट्रीटमेंट के अंदर, जिसके बारे में आपको कुछ भी नहीं मालूम। अब एक बात बताओ, ये कहाँ की अक्लमंदी है? जब मुझे मालूम है मेरा पेनम काम नहीं कर रहा, मैं अपने गट बैक्टीरिया को क्यों बर्बाद कर दूं, अपने लीवर को क्यों बर्बाद कर दूं ओवरडोज लेके? चलो बैक्टीरिया सेंसिटिव भी दिखा दिया, मेरे में तो इतनी अकल है ना कि अगर मैं मेरोपेनम एंटीबायोटिक लूं तो मेरा शरीर बर्बाद हो जाएगा। इफ आई टेक मेरोपेनम आई डिस्ट्रॉय माय हेल्थ। तो मैंने सॉल्यूशन कहाँ ढूंढा? बेच फ्लावर रेमेडी में। आई एम फॉन्ड ऑफ बायोकेमिक्स, आई एम फॉन्ड ऑफ homeopathy, I'm fond of Ayurveda. So whenever I studied all this, I integrated it. मैंने बेजेच्य रत्नावली, सारंगधर्ष, आयुर्वेद सार संग्रह, यादव जी, त्रिकम जी, ये सब पढ़ा है। बोरिक्स, हैंडमैन, फार्माकोपिया, मुखर्जी, बैनर्जी, रोज, कोपिकर। हाँ, इतना पढ़ने के बाद तो थोड़ा बहुत तो आ ही जाता है आपको। क्यों मेशाना जी, गलत बोला?
The biggest impression of my life was given by Kopikar. The person who influenced me in studying homeopathy was Kopikar. Arnica 1 m, first day 3 dose, second day 2 dose, third day 1 dose, and stop. After 5 days and 7 days, give Restox 2 drops, and then stimulate certain points, sciatica pain over Baba. आश्चर्य की बात, 3-6 टपके में साला साइटिका जैसा सीवियर पेन, न्यूरल्जिक पेन खत्म। अब तो खैर मैं प्रैक्टिस नहीं करता, नहीं तो ये मेडिको लीगल केस हो जाएगा। पर अपने जमाने में हम लोगों ने बहुत प्रैक्टिस किया है। वी हैव प्रैक्टिस वेरी नाइसली। So you should understand what is extra pyramid. So whenever you work with paralysis, it is the recovery of this trait. समझ में आया आपको? कोई भी पैरालिसिस नहीं, कोई भी बीमारी को अगर आपको रिकवर करना है, यू हैव टू वर्क विद दिस ट्रेट। So now you understood upper versus lower motor neuron damage. So it is comes under MND. अपर मोटर न्यूरॉन में क्या होता है? लिटिल और मसल एट्रोफी, नो मसल एट्रोफी, मसल की एट्रोफी इतनी सीवियर नहीं होती, but weakness of variety, severity, spasticity, hypertension, in case of deep and tendon reflexes, all these are there. So hyperreflexia is there, extensor plantar response. You will see Babinski sign and no fasciculations. So upper motor neuron में सबसे important बात है, there will be no fasciculation. फरफराना बोलते हैं ना, अंग फरकन लगे, मंजुल मुंगुल बूल बाम, अंग फरकन लगे, जानी गोरी अनुकूल सिया, हरस न जाए कोई, मंजुल मुंगुल मूल बाम, अंग फरकन लगे. So you see, there itself in Ramayana, the symptoms of upper motor neuron was described. The whole theory, Jani Gori Anukula Siya. So if you see, Siya is a synonym in which there is a communication from atom of the pathway, you understood? So when you are happy, this pathway is overexcited. But when this pathway is damaged, the fasciculations are over. But when you are working with lower motor neurons, that are, where are the upper motor neurons? In the brain. And the lower motor neurons are in the, where? In the spine. So myosal atrophy is marked and weak muscles are marked, flaccidity and hypotonia. So the person's hand and leg will become severely flaccid because the signal from the spinal cord does not go to the hand. So we should be very careful when we treat a stroke patient. The higher the spasticity, the more the contracture, and sometimes if the flaccidity is not recovered, the lower motor neuron also get involved. बात समझे? यस सर. ये विधाता का बड़ा अजीब चमत्कार है ब्रेन के साथ। लोगों ने इतना समझाया, जब मैं क्लिनिक में बैठा तो मुझे भी नहीं समझ में। मैंने समझ कर समझ को समझने की कोशिश की और समझ कर समझ को ना समझ कर अच्छा लगा। कहूं पार ना पाया, कवियों ने भी राम की उपमा इतनी लिखनी जितनी राम ने भी ना जानी। दिस हाउ ही सेड इन हिंदी,
The poets have written the description of Ram in so many ways. Even Ram does not know what it is. But if you adopt one good principle of Ram, random access memory, right, you will be able to understand the very much pathophysiology of recovery of paralysis. इसलिए कहा जाता है व्हाट, राम की महिमा राम भी नहीं जाने, जितनी कवियों ने उपमा लिखी है, और राम के गुण को एक अपना ले जो राम संग हो जाए। दिस इज कॉल्ड द सिग्नल पाथवे। एक सिग्नल पकड़ के आगे निकल जा, फिर 8 पेन का चमत्कार तक। इसलिए मैं बोलता हूँ, ट्राई टू लर्न। I cannot teach you so many things because if I teach you, you will not practice. You are just learning to improve your knowledge. That is good, but you are not learning to practice. A practitioner's mind is a different mind. There is no question in the mind. वो करता है, so there is no stop and gap barricade in his mind. मैंने एक 5 दिन की क्लास में एक आदमी को भी कुछ भी लिखते हुए नहीं देखा। This is what I have learned. Then what do you understand? I did not learn anything. And then I said, neuroplasticity will take time to understand. Maybe करत करत अभ्यासा जन्मति होत सुजान, नसरी आवत जात के सिल पर परत निशान. This is how Tulsidas said about neuroplasticity from Rama. What? The repeated activity brings the strain on the will, and this brings the image processing. The signal is processed here, and this signal processing is interrupted. So when you come to that situation, the signal will reflect and you will do your action accordingly. For example, if you see a lion, you start running away from the lion. If you see a dog and you are afraid of dog, you run away from that dog. So this is how it is said. Whatever habit you indulge right now in yourself, you will become the master of those habits. This is what it is spoken here. Fasciculation. It is just like this is not there and this is there. So in this, little or no muscle atrophy is marked, weak marks, flaccidity, hypotonia, absent deep tendon reflexes, right? Absent of normal flexure, plantar response, and fasciculations are present. So you see, this is the SLS plantar bicep triceps reflex S1, L3, C5, C6, C7, C8. So these are the reflex chart. आपने देखो, आपको रिफ्लेक्स चार्ट के बारे में नहीं मालूम, आपने कुरान को पूरा बांट ही दिया। अल्लाह ना जाने मोहे मैं कुरान बांट चला। मैं अल्लाह को नहीं समझ पाया, अल्लाह के गुनों को नहीं समझ पाया, और मैंने पूरी कुरान बांट दी, है ना जिसका मैडम? हाँ, ये तो होता है। अल्लाह को हमने समझा ही नहीं, अल्लाह की नहीं, रहमत को नहीं समझा, अल्लाह के रसूलियत को नहीं समझा, अल्लाह की कायनात को नहीं समझा, नहीं, नहीं, मैं उसकी डीप दया मैं और डीप उसकी कुछ भी नहीं कोशिश समझा, कर रही हूँ। राइट? कोशिश कर रही हूँ सर, डीप में जाने की कोशिश कर रही है मेरे पास स्कॉलर। नहीं, वो तो सब ठीक है, बट मैं ऐसे बता रहा हूँ,
अल्लाह के हाँ बारे ये में तो हमने कुछ नहीं ये जाना। तो सही है। और फिर सारी दुनिया में और कर रहे सारी कुरान बाच डाली। हैं। वो हाँ कुरान ये किस काम की बताओ। हाँ ये तो बात है, ये सारी दुनिया कर रही है आजकल, वही कर रहे हैं ये सदियों से। समझना एकदम सही बात समझ बोला। समझ समझना दूर की बात है, करो वो जो अपने मन को भाए। एक एक इसके लिए वर्ड कहा, सेंटेंस। आजकल की एक कहावत, ये नागालैंड में कहावत है। नागालैंड का नाम सुना आपने? हाँ सुना है। तो वहाँ सुना एक है। कहावत है, मेरे मन को भाया, मैंने कुत्ता काट के खाया। ये कराड़ में भी तो होता है, कराड़ में भी तो होता है अपने। नागालैंड जाने की क्या जरूरत है, इंडिया में भी तो होता ही है। नागालैंड की कहावत है, मेरे मन को भाया, मैं कुत्ता काट के खाया। ये इंडिया में भी है सर, कहावत। तो समझो ना, मैंने अल्लाह को समझा, न रहीम को समझा, न उसकी रसूलियत को समझा, जो अनल हक तक जाने की जर्नी को नहीं समझकर हमने कुरान की ऐसी की तैसी कर, जो रसूल की इंडिया में बात है वो तो मानी नहीं। भी जो फतवा इंडिया में हमने लिखा था, फतवा लिखा था कि अपने अपने कर्मों के अगेंस्ट में फतवा, जो अपने ईमान को का खत्म कर दे, उसके अगेंस्ट में फतवा देना। अब बात समझे, फतवा का मतलब होता है टू डिसिप्लिन योरसेल्फ, टू क्रिएट ए सेल्फ डिसिप्लिन इन योरसेल्फ, राइट? जहां तक मुझे मालूम है, लाहौल बिलाव। पीस बी अपॉन ऑन दैट। अगर मैं कहीं गलत हूं तो आई एम सॉरी, बट मैंने एक ही बात सीखा, फतवा का मतलब होता है अपने आप को डिसिप्लिन करना, अपने अवगुणों को खत्म करना। और नहीं सबसे नहीं, ये पहला फतवा वाला सिस्टम है ना, फतवा वाला सिस्टम मौलवी लोग देते दूसरे के खिलाफ, दूसरे के ये खिलाफ तो देते। आप लोग, ये तो आप लोगों ने बना दिया ना सिस्टम, ये सिस्टम है, रॉन्ग राइट? है ये, यहाँ का इंडियन सिस्टम नहीं है। उनको सही से अरबी ना पता है, ना अरबी पता है, ना अरबी का पैर भी सर भी पता नहीं है, हाँ और एकदम सही। फतवा दे देते हैं। अब आपको मेरी बातें समझ में आने लग गई। ना अरबी मालूम, ना सर भी मालूम, हमने फतवा दे दिया। आपने भी हाँ, यही किया। हमें अरबी मालूम ना पढ़वी मालूम, हमने प्रेम का फतवा जारी कर दिया। ठीक हुआ तो हुआ, नहीं तो मोटर नहीं लाइन तेरी जिंदाबाद। सर, नहीं, मेरे को प्रोटोकॉल मिला था, मैं प्रोटोकॉल फॉलो कर रही थी, और जो मुझे एक्सप्लेनेशन वो मिला था नहीं नहीं नहीं, मैंने कब मना किया? आप भी तो वही मौलवी साहब वाला काम किया, ना अरबी समझी, ना मौला समझा, ना कुरान समझी, राइट? हाँ सॉरी इसके लिए, ये मेरा मिस्टेक है। अब मैं मैंने डीप कब में आपको, मैं जब अब मैंने मारूंगी कुछ तो बोला आप, समझ में आएगी। मैंने आपको डांटा है क्या? बताइए, जो मुझे आप सॉरी नहीं बोल रहे नहीं हैं। नहीं 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 नहीं, सॉरी मीन्स मैं अपने लिए सॉरी बोल रही हूँ कि मेरी ये मिस्टेक है। मेरे को डीप में मतलब डाइव मारना चाहिए था, मुझे पूरा गहराई में छानना मांगता था, जब जाके मैंने एक्शन लेना मांगता था। हाँ ये अब मेरा मेरी बात मिस्टेक आपको हुआ, समझ में आई। ये मेरा मिस्टेक हुआ कि मुझे उतना डीप नहीं गई थी मैं जब तक मैंने एक्शन लिया। ये हाँ मेरा बस मिस्टेक यही मैं हुआ। आपको समझ, मैं आपको यही हाँ समझाने की कोशिश कर रही हाँ, थी। जब अंडरस्टैंड, आदमी आई को कैन अपनी गलती अंडरस्टैंड। का एहसास हो जाए, यस यस वही यस। पश्चाताप होता है। हाँ उसी ये को बात, इस्लाम कहते हैं, उसी को ये बात, इस्लाम कहते हैं। ये तो है। राइट कि जो राइट। आपने आपने अपनी गलती मान ली ना, कि मुझसे गलती होगी, कि मुझसे बस हो गया, बात खत्म हो गई भाई, ये मेरी गलती थी, मैंने मान ली। रॉन्ग हूँ, मैं रॉन्ग हूँ, सही रॉन्ग हूँ कि मैंने जितना सरफेस लेवल पे सीखा। हाँ मीन्स कैसा, मेरा बैकग्राउंड मेडिकल का है, मेरे फैमिली में सब मेडिकल फील्ड के हैं, बट आई एम नॉट, आई एम नॉन मेडिको। और मैं कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से इस फील्ड में आई, और हिजामा हिजामा के एक्यूपंक्चर ये करते करते मैं इसमें डीप जाते गई। लेकिन मैं अभी भी इतना डीप में नहीं हूँ, मुझे अंदर डाई मारना पड़ेगा, मुझे अंदर तल में छानना पड़ेगा, तब जाके मुझे एक्शन लेना पड़ेगा। ये है। सही मैं बात करा, अभी जितना ये एकदम समझी सही हूँ, बात कही। इसी इसी का बात कुरान, इसी को शरीयत बोलते हैं बेटा। मैं अब फादर मैं जब, माँ। आई विल टेल यू अ वेरी ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ दिस, व्हेन आई वाज सिटिंग विद साई इमाम ऑफ जम्मा मस्जिद, राइट? तो मेरे बगल में बैठे थे, तो उन्होंने मुझे पूछा था, ये आस्क्ड मी सिंपल क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय अल्लाह? अल्लाह का मतलब क्या है? अल्लाह को तो मुझे कैसे समझाओगे कुरान के हिसाब से?
आप कैसे समझाओगे मैडम मुझे अल्लाह के बारे में, कुरान के हिसाब से बताइए। कुरान अल्लाह के कुछ बारे नहीं में में क्या सब कुछ है। बताता है? मेरे हिसाब से कुछ नहीं में सब कुछ है, वही खुदा है। हाँ, मैंने एक ही बात बोला, देर इज नो प्रीफिक्स एंड देर इज नो सफिक्स। खाली अल्लाह ही जाने अल्लाह क्या है। वो तो है। पर कब पर कवियों ने भी इतनी उपमा लिखी अल्लाह की, इतनी उपमाएं लिखी उसके ऊपर, इतनी लिखी। अभी हमको पता है क्या, हम जो देख नहीं सकते, लेकिन नो मैटर, मैटर ये सब तो इसके अंदर ही है ना। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन सब तो कुछ तो इसी में घूम रहा है, जो दिख रहा नहीं है। लेकिन सब कुछ तो उसी के बेस पे चला है। फोन नहीं चल रहा नहीं, है, वो ये देख, नहीं 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 नहीं, देखिए, उसको वाइब्रेशन दिखने आ के रही। लिए भी आपको, नहीं नहीं, उसको दिखने के लिए भी आपको नजर चाहिए, राइट? नहीं नहीं, वाइब्रेशन को इसको कैसा देख पाएंगे आप? ऐसे वाइब्रेशंस को भी नॉर्मली देख हम सकते देख हैं। नहीं नहीं, सकते आई विल शो यू इन ए यूट्यूब, यू कैन सी वाइब्रेशंस ऑल्सो। हैं। वाइब्रेशन इज मेन सोर्स है इसका, ब्रह्मांड के सारे एनर्जी का नहीं मेन नहीं, सोर्स। आपका आप वाइब्रेशंस को भी देख पाते हैं। इट इज नॉट लाइक नहीं दैट नहीं, यू कैन नॉट सी वाइब्रेशंस। वो दे वो आर तो कोई सफिशिएंट मेथड इक्विपमेंट, मशीन। नहीं दे आर नहीं, सफिशिएंट मेथड है इक्विपमेंट्स, मैं बता रहा हूँ, जिससे वाइब्रेशन भी मेजर किया जा सकता है और देखा जा सकता है। आज जो हाँ, हम लोग मैंने ये जो पेन बता रहे हैं, वो क्या छोड़ती है? वो भी तो वाइब्रेशन। वाइब्रेशन छोड़ती है ना, पल्स हम्म। छोड़ती है। वह हम्म। वाइब्रेशन की गति को देखकर मैं आज भी आश्चर्यचकित हो जाता हूँ। जो चीज निराकार है, जिसकी कोई आकार नहीं है, राइट, पेन राइट। से निकलती है, साकार से निराकार निकलता है, राइट, हम्म। और फिर हम्म। आकार में मिल जाता है, और फिर वो निराकार ब्रह्म में चला जाता हम्म। है। यू पुट ए नीडल एंड यू स्टिमुलेट विद द नीडल विद द पेन। द पेन एक आकार है, जैसे सिंगल ऑब्जेक्ट, वो आकार से एक निराकार निकलता है, राइट। द राइट। वाइब्रेशन निराकार है, हम्म। वो पेन के अंदर जाता है तो वो आकार ले लेता है, राइट। हम्म। बट जब ब्रेन के अंदर चला जाता है तो भ्रम हो जाता है। हम्म। जब मैंने हिप्नोसिस का कोर्स कर रही थी, मेरे कुछ ये प्रॉब्लम, मतलब फैमिली में प्रॉब्लम था, और मैं डिस्टेंस हीलिंग के लिए हिसाब से मैं हिप्नोसिस कर रही थी। तब मेरे को पता चला कि वाइब्रेशन जो है वो हम लॉन्ग डिस्टेंस पे भी इफेक्ट करते हैं। और वो वाइब्रेशन का मीनिंग जब समझ में आया ना मेरे को, फिर मेरे समझ में आ रही है, हमारी आजान है, ये पूरा वाइब्रेशन है, और उसकी वजह से ब्रह्मांड की निगेटिव एनर्जी को खत्म कर रहा है वो। पता ही नहीं था कि ये इतना बड़ा काम करता है। ये इतनी एक छोटी सी चीज है जो दिन में 5 बार अजान हो रही है, पर वो एक्चुअल वाइब्रेशन जोर से छोड़े जा रही है ब्रह्मांड में, और जो एनर्जी को खत्म कर रही है। उसका बाद में डीप जब गई, जब मेरे को ये सब समझ में आया कि ये, देखिए, क्योंकि ये आजा सब चीज, अरेबिक लैंग्वेज है, फुल्ली वाइब्रेशन है अरेबिक। बाकी हाँ राइट, लैंग्वेज का पता नहीं, तुरंत अरबिक एक इज फुल्ली वाइब्रेशन है। वाइब्रेशन है, वो बिल्कुल फुल्ली वाइब्रेशन है। वाइब्रेशन, फुल्ली वाइब्रेशन। हाँ, और उसके आपने थ्रू एक, एनर्जी को आपने, खत्म मैं किया आपकी जा बात रहा को इसलिए समर्थन है। करता हूँ क्योंकि व्हेन आई स्टडीड अबाउट द न्यूरोबायोलॉजी ऑफ अल्लाह, तब मैंने इस बात को पकड़ा कि इट इज ए वर्ड, नॉट इट इज अ वाइब्रेशन। हर शब्द में ब्रह्म है। हाँ। हाँ। एंड ये जब बहुत पावरफुल स्ट्रॉन्ग वो वर्क कर रहा है। और मैं जितना भी राइट। डीप में इसमें जा रही हूँ ना, तो वो मेरे को उतना, यानी और भी हो रहा है। एक नोमान अली खान करके है, जो स्कॉलर है अरेबिक के, उन्होंने अरेबिक कुरान शरीफ को अरबों से सीखा है, वो भी एशियन अरेबिक। तो उनके शास्त्री थ्रू जी, एक एक वर्ड का जो बता रहे, तो उसमें समझ में आ रहा है कि उस एक वर्ड में ब्रह्मांड छुपा है। यू एक आर वर्ड में राइट। So when you speak एक about Allah, one word is equivalent to the universe. Shastri ji, I have Each to यूनिवर्स। drop letter. out. I have low battery and we have a power failure here in Abuja. Okay, My bhai. system is Allah gone down. It's going Hafiz. to crash any moment. So I'll be leaving वो now. ये जो मैं आपको बताई कि मुझे समंदर में डाई मारना पड़ेगा, मुझे नीचे से जाके हीरे जवाहरात ढूंढना पड़ेगा, उस